Hello everyone, welcome to my channel. We are going to discuss the few important MCQs which are very useful for lecturer preparation in botany. So, first one is the eyes of the potato tuber are known as. They are axillary buds, root buds, flower buds or shoot buds. So, basically they are axillary buds. They arise from nodes. Question number 2 is the organisms called methanogens are most abundant in a. Methanogens are the bacteria which produce methane. So they are most abundant in hot spring, sulfur rock, cattle yard or polluted stream. So they are most abundant in cattle yard or paddy fields. Cattle yard contains waste material of cattle which is converted into methane by methanogens. Question number 3. Which one of the following have highest number of species in nature? Angiosperms, fungi, insects and birds. So insects is the right one. Phylum Arthropoda is the largest phylum. Next is the Archigoniophore is present in Funaria, Markensia, Cara, Adiantum. Archigoniophore is the stalk bearing Archigonia and it is the characteristic feature of Markensia. Next one is compared with gametophyte of the bryophytes. The gametophytes of the vascular plants tend to be. Gametophytes in vascular plants is smaller and have smaller sex organs. Option first is the correct one. Gametophyte is not independent, free living in Pinus, Polytrichum, Adiantum, Markensia. तो इसका राइट आंसर है पाइनस, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो स्पोरोफाइट जनरेशन से अटैच होता है. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज गोल्गी एपरेटस. पेप्टाइड सिंथेसिस inside a cell takes place. This is a tricky question. Peptide means protein synthesis, and we know protein synthesis takes place in the ribosomes. Option first is the right one. Next, in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is cell wall, plasma membrane, nucleus or ribosomes. So इसका ऑप्शन 2 राइट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूबैक्टीरिया में यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करती है. नेक्स्ट है म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विद द गामा रेज. अ collection of plants and seeds having diverse alleles of all the genes of a crop is known as germplasm. Germplasm has collection of plants and seeds having diverse alleles. Next है which one of the following statements is correct? Flower of tulip is a modified shoot. In tomato, fruit is capsule. Seeds of orchids have oil-rich endosperms. Placentation in primrose is basal. टोमेटो का जो फ्रूट है वो बेरी होता है, सो इट इज़ इनकरेक्ट. Seeds of orchids have oil-rich endosperms. Orchids do not have endosperms. And option 4 है placentation in primrose is a free central. So option first is the right one. Flower of tulip is known as modified shoot. Flowers are basically modified shoots. So option first is the right one. Next है nitrifying bacteria reduce nitrates to free oxygen, oxidize ammonia to nitrates, convert free nitrogen to nitrogen compounds, convert proteins into ammonia. So option 2 is the right one.
Nitrifying bacteria, nitrosomonas like, they oxidize ammonia to nitrates. The function of leg hemoglobin LHB in the root nodules of legumes is it is oxygen. Leg hemoglobin is a oxygen scavenger, means it removes the oxygen. Option 3 is the right one, oxygen removal. Next है, which one of the following elements in plants is not remobilized? प्लांट्स में कौन सा एलिमेंट रीमोबिलाइज्ड नहीं होता? सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम. सो ऑप्शन 3 कैल्शियम इज़ द राइट वन. कैल्शियम जो है वो कुछ प्लांट्स की सेल वॉल का कंपोनेंट है, जबकि वो रीमोबिलाइज्ड नहीं होता. ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. अ ड्रूप डेवलप्स इन मैंगो. मैंगो का जो फ्रूट है वो ड्रूप का एग्जाम्पल है. टोमेटो बेरी है, वीट कैरियोप्सिस और पी जो है वो लेग्यूम होता है. नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूड. ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूड्स एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ. सो ऑप्शन 3 इज द राइट वन. इट सेज ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स. एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के सिवाय सारे टिश्यूज जो हैं वो ग्राउंड टिश्यूज कहलाते हैं. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. इन प्लांट्स in land plants the guard cells differ from other epidermal cells in having. गार्ड सेल्स जो हैं दूसरे एपिडर्मल सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट वन. जबकि जो एपिडर्मल सेल्स हैं दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. ओवरी इज़ हाफ inferior in flowers of peach. Peach belongs to Rosaceae and it is the characteristic of Rosaceae, ovary half inferior, half superior. Cark cambium. Cark and secondary cortex are collectively known as perydrum. Thank you.